Good morning, students. Welcome back in CIT online class. I am Mithun Sarkar, your online teacher, and I always come back this types of educational video related to your different subject. So stay with your teacher. Student, today we are going to discuss some question, some very important term related to our computer subject. Okay, so let's start. Student, I write here what is RAM or full form of RAM. Okay, RAM is very important for computer. We also know that in our mobile also RAM. Okay, so write the answer with me. RAM. Actually, it is a short form. The full form is Random Access Memory. In exam, some of the time you will become write the full form of RAM. So you need to write Random Access Memory. It is also called computer short term memory. Student, you can very easily identify random means एक के बाद एक. Okay, so but here is something difference. We can it is brackets short term memory. So we can write like this. Is a form of computer. That means our answer is will be random access memory is a form of computer that can be read and sensed in any order. इसका मतलब क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी ये कंप्यूटर का इस तरह से एक मेमोरी है जो हमारा मोबाइल में भी रहता है. ये कोई एप्लीकेशन को कोई सॉफ्टवेयर को स्टोरेज करता है. इट इज कंप्यूटर शॉर्ट टर्म मेमोरी. इट इज ए फॉर्म ऑफ कंप्यूटर. एक्चुअली फॉर्म ऑफ कंप्यूटर इट इज ए स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी रीड एंड सेंस इन एनी ऑर्डर. दैट कैन बी रीड मीन्स व्हेन यू ओपन ए application, when you open a software in a computer or in your mobile, it can be read your data and it can be sense anything, that means any information from your computer, because it is very important part of computer. Okay, so it is 2 mark question, but when your question will become write the full form of RAM, so it is 1 mark question. You need to write only random access memory. Okay, our next question, write it what is ROM. It is also very different importance. What is ROM? Student, it is always in capital form, or you can write like this full form of ROM.
Actually it will become write the full form of RAM or ROM. Okay, so this answer ROM, write it with me. Right, it is RAM. It can be sensed in different memory. That means 1 GB, 2 GB, 4 GB. You can sense, but ROM it cannot be sensed. Write full ROM. Read only memory. It is the full form of ROM. Read only memory. Student, you can very easily identify read only. That means it can be read only. Okay, another not nothing. Okay, so you can write like this: read only memory that can store, sorry, not a story, store the start of instruction. That means when you give some instruction, that means when you open the application, it can be stored the start of instructions for a computer. Actually it is, this ROM is put inside the computer when it is manufactured. That means जब तैयार होता है इसमें कोई जहाँ पे कंप्यूटर बनाते हैं, जहाँ पे लैपटॉप बनाते हैं, जब ये तैयार होता है तब ROM को इंस्टॉल किया जाता है. तो चलो इसको और एक ओके इसके साथ लिखो डेटा कैन नॉट बी modified. Which data it will be stored. Data cannot be modified. You can write data that is stored in ROM cannot be modified after manufacture of the memory device of the memory device. What is the meaning of this? Read only memory that can store the start of instruction for a computer. When you start a computer, it can be stored the start of instruction, the what you want to do. Then data cannot be modified. That means storage data cannot be modified after manufacture of the memory device. That means when it is made, the different company will be made a computer or laptop. What types of memory they will be input in ROM memory, it cannot be modified after the manufacture of the memory device. Okay, this is our 1 and 2 number question. Then next we will discuss about hard disks, then floppy disks. Okay, so write properly. Okay students, I already written next question on the board. What is hard disk or drive? इसको डिस्क और ड्राइव दोनों ही कहते हैं. ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. राइट द आंसर. ये हार्ड
डिस्क और इसका मीनिंग और भी है तो मैंने वो लिखा है डिस्क और ड्राइव इज द प्राइमरी कंप्यूटर storage device and is to sorry not is and used to store files on the computer. Student, you know that we need to store more things in our computer, like that our video, our documents, then our pictures. So in which place we can store? It is stored in hard disk. It will be different storage capacity. That means you can put in your computer or laptop 160 GB, then 256 GB, then 1 TB. It is different capacity hard disks are available in the market. Okay, so this is the when it is come. What is hard disk or drive? You can write this answer very easily. It is 2-mark question. A hard disk or drive is the primary computer storage device and used to store file on the computer. Actually, I write here primary. So some of the storage is computer storage device is primary. Some of the storage are secondary. Okay, student. Next question. Write. What is floppy disk? Question number 4. What is floppy disk और ड्राइव? क्योंकि इसको भी ड्राइव भी कहते हैं और डिस्क भी कहते हैं। स्टूडेंट, इसको आंसर लिखाने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। फ्लॉपी डिस्क, जब तुम सीडी कंप्यूटर में जो सीडी देने का जगह होता है तुम्हारा सीपीयू में और लैपटॉप में भी कभी कभी होता है, उसमें छोटा छोटा सीडी भी यूज हो सकता है, उसको फ्लॉपी डिस्क कहते हैं। मैं राइट साइड में जो पिक्चर दे रहा हूं तुम उसके साथ इसको देख देख के अच्छे से आइडिया करो। चलो इसके आंसर लिखाते हैं। फ्लॉपी डिस्क और ड्राइव is a flexible student, it is not flexible removable magnetic disc, removable removable magnetic disc for storing data, Actually it is like a CD drive. You know about CD.
it is a circle shape. It is also floppy disk, different shape, different size. Okay, right, and on the right side you can very easily identify it is different capacity, different size. It is also used for storing data. Okay, we have another one question, so note down the question number 3 and 4 properly. Next question, our next question is what is pen drive? Okay, so write it. Third number question. Okay, students, I hope you note down the question number 3, so I can draft the question number 3. And I already take students some of the important class related to your computer subject. You can watch to NCERT online video section. There is a playlist, and in this वीडियो तुम देखते रहो लास्ट तक. तो लास्ट में मैं EVS कंप्यूटर एंड इंग्लिश का जो प्लेलिस्ट है वो मैं वहां पे दे दूंगा. तुम वहां से भी कंप्यूटर का, इंग्लिश का, EVS का सारे के सारे क्लास देख सकते हो. ओके, चलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो. व्हाट इज पेन ड्राइव? स्टूडेंट, सारे के सारे क्वेश्चन में देखो ड्राइव है. एक्चुअली ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइव. ओके, ये पेन ड्राइव क्यों है, क्यों कहते हैं पेन ड्राइव? चलो इसको भी आंसर देख लेते हैं. ये पेन ड्राइव अभी नॉर्मल OTG पेन ड्राइव भी है, देन नॉर्मल पेन ड्राइव, USB पेन ड्राइव भी है. उसको तुम पापा मम्मी पापा के पास देख भी सकते हो, और इसमें पिक्चर भी दिया हुआ है, वहां से भी देख सकते हो. ओके, चलो लिखो. पेन ड्राइव इज अ स्मॉल पेन शेप्ड. एक्चुअली इसको देखने में पेन जैसा लगता है, छोटा सा पेन जैसा, इसलिए इसको पेन ड्राइव कहते हैं. पेन शेप्ड स्टोरेज डिवाइस that connect to a computer by a USB पोर्ट. बस ये USB पोर्ट क्या है? देखो, जब कंप्यूटर में तुम्हारा CPU में पीछे और आगे दोनों पोर्ट रहते हैं, छोटा छोटा जैसा, ठीक है, उसमें तुम ये USB पोर्ट लगा सकते हो. उसको USB पोर्ट कहते हैं. उसमें हम ये पेन ड्राइव इस्तेमाल करते हैं कोई डेटा लेने के लिए कंप्यूटर से और लैपटॉप से, और कोई डेटा अंदर देने के लिए. और ये पेन ड्राइव भी एक स्टोरेज डिवाइस है, छोटा पेन जैसा है. अभी OTG पेन ड्राइव भी मिलता है जो हम लोग मोबाइल में डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम एंड फॉर योर नॉलेज अबाउट कंप्यूटर नॉलेज. सो राइट प्रॉपरली. Okay students, I hope you note down all of the 5 question properly, and this class is helpful for your study.
So if you want to this types of class, if you like this class, you can like, you can share with your friends, and if you are new, you can subscribe the channel. Okay, thank you all of you.